So currently I have opened this inner canteen folder. ठीक है, ये inner canteen folder किथे सीगा मेरे कोल मेरे projects वाले folder दे अंदर bit final canteen और ਇਹਦੇ अंदर है project ਦਾ folder ਸੀਗਾ canteen वाला. This folder we are going to discuss today. So in this folder there are certain subfolders which are of importance. वो subfolders ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? The first subfolder is the public folder. ठीक है, पब्लिक फोल्डर ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 1 2 3 4 और 5 ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਥੀਸ ਫਾਈਲਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਬੂਟਿੰਗ ਫਾਈਲਸ ਫॉर Laravel. ठीक है, so ਜਿਹੜੀ ਆ index.php file ਹੈ, this is the main file. You don't need to write anything inside this index.php. It is automatically maintained by Laravel. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ Laravel based website open ਕਰੋਗੇ, that website will hit this index.php file here, and then this index.php will automatically call the autoloader and it will load all the files which are required by the Laravel. ठीक है, so इस public folder ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, but later on in the later stages we will be creating images folder, we'll be creating the style sheets folder and javascript folders inside this public folder. ठीक है, but for the time being ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ public folder ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. The second folder of the most importance is the app folder. All the application logic that includes the models as well as the controller that resides inside the app. ठीक है, सो ਅਸੀਂ MVC ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਡਲ ਵਿਊ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਵਿਊ, ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ, those two things reside under this app folder. So where do those two things reside? The models folder is straightforward under this models folder. ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ models ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ tables create ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ projects ਦੇ regarded, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ projects ਦੇ corresponding ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ class files ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. Like ਇੱਕ user folder already ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, that user folder was created with the help of this auth ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਯੂਜ਼ਰ that extends the authenticable class. ठीक है, so we don't have to do anything with this file also right now, but ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ next ਆਉਣ ਵਾਲੇ sessions ਦੇ ਵਿੱਚ tables create ਕਰਾਂਗੇ, every table will be having a corresponding model associated with that, which will be specified in a specific file. Say for example आप categories का एक model table create करते हैं, then you need to have a category.php file inside the models. If you create a table for products, then you need to have product.php file under the models. ठीक है, so these files will be specifying कि ਤੁਹਾਡੇ table ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ fields ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ fields ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਕਰਨਗੇ. All that has to be kept under this models folder. Then for controllers, this HTTP folder is having a subfolder called controllers. ठीक है, और जिन्ने भी तुसी controllers create कर रहे हैं, ठीक है, every table will be having a separate controller for that. So जिन्ने भी controllers तुसी create करोगे, all those controllers will reside under this controllers folder. ठीक है, like there is a one by default made home controller .php which is the home controller, then there is a controller.php which is the root for all the controllers. ठीक है, then for authorization purpose ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇजेस ਆਪਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ, ਫੋਰਗॉट ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ, ਲੌਗਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ, then ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ, ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ controller hai. So all these controllers are inbuilt, but for your tables that you are going to create in the coming sessions, you need to create your own controllers and those controllers will be residing under the controllers folder. ठीक है, सो ये दो फोल्डर्स आपने याद रखने हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली ये दोनों फोल्डर्स यूज होंगे. एक तो ये मॉडल्स का फोल्डर और दूसरा कंट्रोलर्स का फोल्डर. मॉडल्स का फोल्डर आपको सिर्फ एक बार सेट करना पड़ेगा. कंट्रोलर्स के फोल्डर आपको हर बार कोई भी अगर आप फंक्शनैलिटी चेंज करते हो अपने प्रोजेक्ट में तो जनरली हम उसके कंट्रोलर फोल्डर में जाके नई फंक्शनैलिटीज को ऐड करते हैं. ठीक है, पर अगर टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करनी है देन यू नीड टू गो फॉर द मॉडल. फाइन. Then besides this controller, there is a middleware folder.
which will be responsible for all the authentication related tasks. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ਰ ਔਰ ਪਾਸਵਰਡ ਬੇਸਡ authentication ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ OTP ਬੇਸਡ authentication ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਟੂ ਫੈਕਟਰ authentication ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੇਸਡ ਲੌਗਇਨਸ ਜਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਓਨਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟਵੀਕ that code. So very rarely this middleware will be used. Most frequently the controller and the model, these two folders will be used under this HTTP folder. ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर और अपने को बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रहेगी। प्रोवाइडर्स फोल्डर है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। For the time being, let's ignore that particular folder. Then under the config folder, there is one file called app.php which will be used for defining the various constants related to your app. So आपने कुछ भी अगर constant कुछ बनाना हो, so that constant can be defined inside this app folder. If you need to handle any type of database, those database related credentials are, those credentials can be specified either in the config then database.php file, or you can tell that in the env file environment, this env file .env. The .env is the hidden file inside this Laravel folder, which will be used for storing the database username and passwords. So for the timing ये दो चीजें ही हमें यहाँ पे इसमें काम में आएंगी, और इसमें भी सिर्फ एक आधी बारी आपको ट्वेकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। Then under the database folder you have a migrations subfolder. This folder will be containing the definitions for all your tables. ठीक है, and it will be helpful for creating migrations, for starting up the project, or for resetting the project to the initial state. सो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो प्रोजेक्ट में हम लोग डेटाबेस में कुछ जंक एंट्रीज डालते रहते हैं, एंड वो करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, एंड देन नाउ वी वांट टू स्टार्ट टेस्टिंग आवर प्रोजेक्ट वंस अगेन. सो वी नीड टू क्लीन द एंटायर डेटाबेस एंड देन स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये माइग्रेशंस अवेलेबल है. दीज माइग्रेशंस विल हेल्प यू टू रीसेट योर डेटाबेस टू इट्स इनिशियल स्टेट by deleting all the tables and then recreating all the tables once again, thereby leaving all the database empty for the testing work. ठीक है, सो वो migrations हम यहाँ पे create करेंगे. ये भी folder importance का है, तो ये भी आप इसको नोट करके रख लो कि migration folder में भी हमने कुछ काम करना है. Nothing else in the database. Then next folder is this resources folder, और इस resources folder के अंदर views folder जो है, this will contain the different views. जो हम MVC की बात करते हैं, model view controller, तो उसमें जो मॉडल और कंट्रोलर थे वो ऊपर ऐप फोल्डर में आ गए, और जो व्यू है वो यहाँ पे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे पड़े हुए हैं. सो ऑल द व्यूज विच आर यू आर गोइंग टू क्रिएट, those folder, those views will be created inside this views folder. ठीक है, ये views क्या होते हैं basically? These are the HTML pages which are visible to the general public. For example, जैसे ये वाला एक पेज है, तो this page is also a kind of a view, and this view is the welcome view. ठीक है, यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे that thing will be visible to you. So if I delete all this and I simply write welcome in this view, then you will see कि आपके पास सिर्फ एक welcome message ही आएगा. अब यहाँ पे ये HTML डिफाइन कर रहा है div class and div, ये बॉडी है यहाँ पे. So if from this point onwards ये बॉटम तक मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, अगर जस्ट बिफोर द बॉडी टैग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है, एंड आई सेव दिस फाइल and I refresh this, so you will be seeing that welcome message on the screen. ठीक है, so this view will be containing the files which are visible on the user's screen. ठीक है, so for every view you will be creating a separate file, and maybe के कुछ different views जो है वो कुछ common files को आपस में share भी कर सकते हैं. ठीक है, then the view you can create subfolders under this views folder. जैसे आपने जो टेम्पलेट क्रिएट करनी है, तो वो टेम्पलेट आप यहाँ पे लेआउट फोल्डर्स के अंदर यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, एंड देन यू कैन रीयूज दोस टेम्पलेट्स
अगेन एंड अगेन उनका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आप बना के रख लो, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो इनर पोर्शन है वो इनर पोर्शन आप चेंज करते रहो. दैट कैन बी हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लेआउट्स फोल्डर. ठीक है. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट फोल्डर्स विच आर अवेलेबल इन दिस लारावेल. एक फोल्डर और रह गया, राउट्स फोल्डर. ठीक है. राउट्स फोल्डर के अंदर एक फाइल है web.php. दिस फाइल इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ लारावेल. ठीक है. इन दिस फाइल यू विल बी टेलिंग कि if user demands something, some file, x file, then where to go and present what file. ये बेसिकली एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है. जो राउट है, जो भी पर्सन कोई रिक्वेस्ट करेगा किसी भी फाइल की, से फॉर एग्जांपल ऑन द वेब आई रिक्वेस्ट bit3 एंड लेट्स से आई रिक्वेस्ट अ रजिस्टर पेज. ठीक है. और आई रिक्वेस्ट अ लॉगिन पेज. then who is going to serve this register page or login page, और let's say मैं यहाँ पे लिखता हूँ http://bit3/category. I am requesting this page. Then who is going to serve this category page? कहाँ से इस पेज को लेके आना है? All that stuff is defined inside this web.php file. ठीक है. So this will again be very much helpful to you also. ठीक है. Then storage and tests you can leave. The vendor folder is created automatically by default by the composer. जब आप composer create project की command issue करते हो या composer require वाली command issue करते हो, तो वो इंटरनेट से फाइलें डाउनलोड करके यहाँ पे इस vendor folder के अंदर प्लेस कर देता है. So these are basically all the libraries which will be used by Laravel for its smooth working. ठीक है. Then env file is important. In this env file you will be telling about your database connectivity, how you are going to connect to your database. So currently on my system I have MySQL installed, which is working on port number 3309. by default यहाँ पे 3306 है. आप लोगों के पीसी में भी ये 3306 ही होगा, बट मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने डेटाबेस के पोर्ट को 3309 पे शिफ्ट किया हुआ है. Then all the Windows users will be having the username as root and password will be empty. But on Linux or on Mac OS, we have the password as root. Fine. So you need to change this to root and root. And then this last one entry, DB database is equal to Laravel. Instead of that, you will be putting up the name of your database that you are going to create in your project. ठीक है. So उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? You need to open the PHP MyAdmin in your local host. तो कैसे आप ओपन करोगे? Go to your browser and write there localhost/php myadmin. You need to take care of the upper and lowercase letters. http://php myadmin. So you will be getting this kind of interface with PHP MyAdmin. All these are the databases for my practice projects. So when you need to create a new database, you go to this databases tab on the top and then write the name of the database that you're going to create. Say for example, we are since we are doing the canteen project, so I'll be creating the database name canteen. And collation is like what character set you are going to use in your project. So we will be using the Unicode text format UTF-8. So the collation will be UTF-8 general CI. So this will be handling all the Hindi, Punjabi and other Indian language characters as well. So just create this database and it will create this database and open up this empty database at this particular place. Fine. And now I can safely write the name of this database into my .env file as canteen. Fine. So this has prepared the groundwork for connecting to the database and starting up with your project right away. Any doubt you have till this point, you can ask. So in this step number 5, we need to tell the Laravel to increase its default string length. तो वो change आपको कहाँ पे करनी है? वो आपको app folder के अंदर providers folder है,
और उसके अंदर एक ऐप सर्विसेज प्रोवाइडर नाम की फाइल होएगी. सो लेट्स सी वेयर दैट फाइल इज. So here is this app folder. In app folder, we have a providers folder and there is app services provider folder. Under this folder, there is a default function called boot function, which is available over there. And I need to put this line inside the boot function. So I'll be copying this line from here. And in the app service provider, here is the boot function available. So just removing this comment and pasting the string length requirement into this will serve the purpose. ठीक है. ये एक बग लारावेल में बहुत देर से चली आ रही है और ये आपको हर बार एक बार अपने इनिशियल प्रोजेक्ट में आपको सेट करनी ही पड़ेगी. ठीक है. I don't know why they are not putting this by default. Fine. Now after that we start with the migration process. ठीक है. For migration you need to understand the table structure कि आप जो tables create करने जा रहे हो वो tables क्या क्या होंगे. Fine. So first of all we will be creating tables which are required for us. And where to do that? Open up the command prompt and go to your projects folder. Documents, Git, bit3 and canteen. This is my inner canteen folder which contains all these files. ठीक है. ये जो app folder and all सारा ये कुछ जो बना हुआ है ls-l करके दिखाता हूँ आपको. This is the folder where I'm going to start my work. Fine. So there is an artist available in Laravel which is going to do some magical tasks for you. We call that artist as artisan. Fine. And we will tell this artisan to perform various tasks, to automate various tasks for us. So the first task is to create a migration. Okay. If you write this command php artisan migrate fresh, then it is going to delete all the tables in your database, the database that you have just created at this place. ठीक है. तो इसमें अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई भी tables नहीं है. So it doesn't matter कि मैं ये command issue करता हूँ कि नहीं करता हूँ. Fine. But once your tables are created, then you need to be very careful before issuing this fresh command because it is going to delete all the tables and then recreate all the tables. तो आपका जो data है वो इसमें loss हो जाएगा इसमें अगर आपने कुछ already create किया हुआ. You must take up the backup of that table in the form of SQL files outside the project. So let's move on, and I need to create my first migration for my project. So what is that migration? So after that, I have opened this particular folder, the inner canteen folder. I will be issuing this PHP command, PHP artisan make migration create underscore category underscore table. So this is the command. In this command, create and table, these two things are compulsory, and in between these two, you can write the name of the table. So create category table. I have written here, create category table, and just press the enter key, and you will see that in my database folder, in migrations folder, as soon as I press the enter key, you will see another file visible in this place. So it says app provider schema not found. So what you have to do is in your providers file, you also need to use this schema. So I'm copying this, go to app providers, app service providers, and at this particular place, just write this syntax, use illuminate support facades and schema. Save this, and now you can successfully create the migrations. So you can see the quick change. As soon as I press the enter key, it has created a file here, create category table. Fine. So it has created this migration, create category table like this.
ठीक है, and this category table, uh, uh, the class is created at this particular place. So it is automatically going to check key what table name is it requires. So schema colon colon create category. So it is going to create a category table. What are the fields required in this category table? The first field is table ID. Fine. The remaining fields I need to define. And the last field is table timestamps. So Laravel has a facility to automatically keep track of when the last record was inserted, when a record was inserted, and when the record was last updated, or when the record was deleted, and who deleted or who updated the record. Fine. So all those things are automatically handled by using this timestamps function. But for the rest of the things, you need to define. Like I need to have a table and then just check the names which are required. Like in the category, I have this ID, then a name, and then status, and then pick. These three fields are required. So table string of, let's say, 100 characters. Uh, you need to specify the name also over here. Inside this string, you need to tell the name of the field. So what was the name? The name is itself name. Fine, just copy this, paste this twice, and then specify the other two fields also, status and pick. Status and pick. Fine. So this will create a categories table in my database whenever I execute this. So save this file. Similarly, create the products table as well. So I'll repeat my previous command, but with category, I'll replace the product table. So under this category table, you have the product table available. I guess there is just less than a minute remaining in this meeting. So